गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीता भुजवानी ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सेल्फ हीलिंग का आज कंक्लूडिंग पार्ट है, जिसे प्रदीप सर हमारे सामने विजडम शेयर करके इंटीग्रेट करेंगे कि हम अपनी सेल्फ हीलिंग कैसे कर पाए। हमने 2 दिन में तो समझा, न किसी गुरु की जरूरत है, न किसी बाहर के मास्टर की, न कोई तंत्र, न कोई मंत्र, न कोई डॉक्टर, न कोई थेरेपिस्ट। हम अपने हीलर खुद हैं। पर उसके जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स सर ने सिखाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो आज लास्ट पार्ट हम सुनेंगे, तो वेलकम करते हैं सर का। वेलकम 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 सर। Yes, madam. Once again, namaskar to everyone. So let us begin with meditation. Drink some water, close your eyes, sit comfortably, and let us do 1 hour of meditation. 50 minutes. Let us do 50 minutes. Okay. You play the music, madam? Yeah. No expectations, my dear friends. Let us enjoy our own friendship with our own breath. कोई अपेक्षाएं नहीं, सिर्फ अपनी सांसों के साथ आपको बने रहना है।
Final 30 seconds. Gently place your hands on your eyes. Five, four, three, two, 1, 0. You may slowly open your eyes whenever you're ready. Drink some water and stretch your body. Relax yourself. And get ready with your pen and notebook. So friends, today will be the final session of this self-healing. We discussed a lot in the retreat, and Neetaji will convey to you at a later stage. But whatever we are going through in these 3 days is what is guided for this group in this moment. You see, the information which comes through during intense retreat is totally different from the information which comes through the Zoom program. Whenever we hear the word self-healing, what does that signify? It signifies healing from a physical aspect, from a mental aspect, and from an emotional aspect. And emotional aspect is very intense actually. So the self-healing can be done only by the self. That is the definition of self-healing. The self-healing can be only, underline the word only, done by the self. Which simply means unless you meditate, you cannot heal yourself. You might go to another healer, you might go to another therapist, you might feel that some healing has happened, but that is very temporary. Unless the healing happens from the self, through the self, by the self, it is not a permanent healing. So meditation is only the way. And we see in our lives, in our life journey on the planet Earth, there would be many moments we feel alone. There will be many moments we feel that there's nobody to understand us, there's nobody to support us. We might feel that we are lost on the earth. It is quite common, especially old souls or star seeds who have come from other dimension, who have taken very few lifetimes. These people go through this kind of feelings. So for them, the self-healing is nothing but emotional healing. And for the people who are going through physical problems, for them, the self-healing is to be healthy in the body. Or for somebody who are having psychic problems, who are having mental problems, for them, the healing means they are normal, they become normal. So the definition of healing
differs from person to person, situation to situation. In my own example, from my childhood, I always felt I don't belong to Earth. From my childhood, I always felt that nobody understands me because I don't meet people like me. Everybody is busy with materialistic things. I used to wonder why people are not loving, why people are always focused on survival, why people are always focused on name and fame. Why don't just people be loving? There are very few people actually I met who are like me. So I used to feel very lost. And even those few people who I meet, they are okay on one level, but they are not okay on the other level. So I always felt lost. And this deep longing was there with me to understand what is this space, what is this creation, what is this earth, who am I, why did I come here, why am I born here? So this quest was there very naturally from my childhood. And that deep quest led me into the path of meditation. And when I meditated, I was healed emotionally. The more I did intense meditation, the more I connected to myself, the more I understood myself. For almost 2.5 years, intense meditation every day, every night, I did. And I understood a lot about myself. I connected to myself. Actually, what exactly happens was, people go through these emotions because they feel a void inside. They feel that there's a lot of empty space inside, a void inside. So the more you meditate, the more you fill that void with your own energy, with your own love, with your own understanding of yourself, with your own acceptance. You fill that void. So that filling process, you don't depend on others, but you are dependent on your own self. So that is a self-healing process. Then the healing becomes complete. Then you become a very emotionally balanced person. Then you become a strong person. Then there is a lot of clarity. Then there is no external dependency because you understand everything, because you are so connected with yourself. Any situation, any incident, anytime, you understand why it is happening and what is the lesson you need to learn. At least you won't be disturbed. You won't swing emotionally. You are balanced. And whatever happens, you understand that whatever happens, happens for good. So why to worry? So you become emotionally stable and balanced. Only meditation helped me. Nothing helped me. I used to think, before meditation, I used to think if I have more friends, then I feel good. I used to have many, many friends. I used to voluntarily create friendships. And the more the friends I have, the more the disappointments I'm having. Because the friendships are, as long as I'm spending time with the friend, I'm happy. But he has to go back to his home, and I have to go back to my home. And we go for a holiday. And once the holiday finishes, again the void comes. So this is creating more disturbance. This is creating more frustration. At the time, that was creating more frustration. Any holiday I go with my friends, towards the end of the holiday, the void comes back again. So before the holiday finishes, I used to feel sad. So this was my state of affairs before meditation. But once meditation came in my life, then I'm myself happy without any external dependencies. And when I became a happy person, then I started enjoying life for the first time. I started enjoying the planet Earth for the first time. Before that, there's always complaints on the planet Earth. Before that, there's always complaints on the humans.
So when I started loving myself, when I started feeling that void, then I started enjoying the beauty of the earth. Then I started realizing what a great opportunity to be on the earth. So my self-healing happened only through meditation. Whatever you are looking for is inside you. The outer cannot fill your inner. So whether it is emotional healing or physical healing or psychological healing, meditation is the only way. Along with meditation, reading books helped me. The more how the reading books helped me is the more I read the books, the more it motivated me to go deep into meditation. See, to do 2.5 years of intense meditation, leaving my career, leaving everything and risking my whole life, to do intense 2.5 hours meditation, 2.5 years meditation is not an easy thing. And that too sitting in a foreign country, Australia, where my debts are accumulating, my bills are accumulating, and I have to pay the bills. In Australia, it's not like India, you stay in your parents' house or you go to ashram without money. Also, somebody will give you food. In India, there is annadana, but in Australia, there is no annadana. You have to pay for your own food. You have to pay for your own bills. So while the debts are accumulating, I said, okay, whatever happens, I'm not going to go to the job and other things unless I discover who I am. Because for me, to live life in that void is worthless. And I know many people who have healed physically. Like Neetaji has healed her physical illness through meditation. And I know many people who have healed their psychological illness, mental illness through meditation. So meditation is the only way. And whatever the subject we teach, we'll go round and round. The straight truth is only meditation heals you. Nothing else heals you. The more you understand this, the more you practice it, the more you experiment on this, the more you understand the depth of it. There is a statement from Osho. Unless you do meditation, you don't know what you are missing. Unless you do meditation, you will never know what you are missing. The Sajjana Sangatya helps to motivate each other in this path of spiritual journey, to meditate. Swadhyaya helps, Sajjana Sangatya helps. In my case, I was alone in Australia. There was no much Sajjana Sangatya. Because I became a hermit, I was disconnected from the outside world. So I used to have a dialogue with myself. Reading books helped me to have a dialogue with the author of the book. I used to connect to the author of the book and I used to have an energetic dialogue. So now you're having an added bonus where you have this online platform where you can ask questions. In those days, I don't know who to ask questions. And nobody's there to answer my questions also those days. And I don't know much about PSSM also in those days. My journey started just with myself. Not until later, not until after 2010, after 2.5 years, knowing myself, then I started connecting to PSSM. Before that, it was my own journey. Okay, Neetaji. The reason I'm telling you about this because you are in a much advantageous position now. You can ask question. I'm in front of you. You can ask question. But those days, nobody's there to answer my questions. And I used to meet Patreju once in a year when he comes to Australia. You know about Patreju. If you ask stupid questions, he will beat you. So most of the time, I never bothered to ask him many things. Only the first time I met him, I asked him a lot of questions to test whether he's a real master or not. But after that, I didn't feel the need to ask questions because the answers were coming from within. So this is also an important point. The more you meditate, the more the answers come from within.
but you can cross-check your answers through such an assignment. So this platform, this Gyaan Bharat, is actually a great blessing for the newcomers of meditation. Yes, madam. Yes. सर बता रहे हैं कि मैंने यहाँ रिट्रीट में आप लोग को 3 दिन में ये सेल्फ हीलिंग समझा रहा हूँ। रिट्रीट में भी मेरा यही टॉपिक था, पर वहां पर कुछ अलग तरह से मैंने बताया था, वो बाद में आप लोग को नीता बता देगी। क्योंकि यहाँ पर जूम सेशन में आप लोग को क्या ज्ञान चाहिए वो मुझे जो इंट्यूशन से मिलता है वही मैं आप तक के पहुंचाता हूँ। जब हम वर्ड्स सेल्फ हीलिंग बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हम शारीरिक रूप से, इमोशनली और मेंटली, तीनों तरीके से हम हील हो सकें। इमोशनल का जो पहलू है वो बहुत ही गहरा होता है, तो सबसे ज्यादा सेल्फ हीलिंग तो सबसे ज्यादा हमें इस पे ही मेहनत करनी पड़ती है। सेल्फ हीलिंग खुद के द्वारा, खुद के लिए और खुद को फॉर द सेल्फ के लिए ही की जाती है। इसका अर्थ होता है कि जब तक कि आप अपने मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक कि आप हील नहीं हो पाएंगे। हो सकता है आप किसी हीलर या थेरेपी के पास चले जाएं, आपकी हीलिंग हो भी जाए तो वो अस्थायी होएगी। सिर्फ जब तक कि आप अपने स्वयं के द्वारा, स्वयं के ऊपर काम करके आप हील नहीं होंगे, वो स्थायी हीलिंग नहीं होगी। और मेडिटेशन उसका एकमात्र रास्ता है। जब मैं पृथ्वी पर आए, कई लोगों को पृथ्वी पर अपने इस यात्रा के दौरान कई क्षणों में बहुत अकेले महसूस करते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत दुखी हैं, उनको कोई समझ नहीं रहा है, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो खो गए हैं। ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है ओल्ड सोल के लिए या स्टार बींग्स के लिए जिनके पृथ्वी पर कम जन्म हुए हैं। तो सेल्फ हीलिंग हम सभी को इमोशनल हील करता है, और ऐसे लोग जो ओल्ड सोल्स हैं उनके लिए इमोशनल हीलिंग मेन एस्पेक्ट होता है। फिजिकल जिनको प्रॉब्लम होता है उनका सेल्फ हीलिंग का अर्थ होता है शरीर का स्वस्थ हो जाना। जिनको साइकी या मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सेल्फ हीलिंग का अर्थ होता है नॉर्मल होके रहना। स्थिति हर लोग में सेल्फ हीलिंग की अलग अलग मीनिंग है। मैं जब छोटा था, तब मैं पृथ्वी पर, मेरे कुछ ही जन्म हुए हैं, तो जब भी मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि कोई मुझे समझता नहीं। मैं बहुत अपने को अकेला महसूस करता था। मैं आसपास के लोगों को देखता था कि सभी लोग सांसारिक चीजों में उलझे हुए हैं। मुझे आश्चर्य होता था कि लोग प्यार क्यों नहीं करते, प्यार से क्यों नहीं रहते, सिर्फ जीने और पद प्रतिष्ठा की दौड़ में ही लगे हुए हैं। कुछ लोग मेरे को ऐसे मिले जो मेरे समान थे, पर वो एक लेवल में तो मेरे समान थे, पर बाकी दूसरे लेवल पे वो मेरे समान नहीं थे। इसके लिए ही मैंने अपने आप को समझना शुरू किया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मेरे आसपास क्या हो रहा है और मेरा जीवन का अर्थ क्या है। मेरे बचपन की जो प्यास थी वही मुझे मेडिटेशन की तरफ लेके आई, और उसने ही मुझे हील किया। अर्थात सर इमोशनल हीलिंग की बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने मेडिटेशन ने ही मुझे हील किया। मैंने बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशन किया, अपने आप को पूरा मेडिटेशन के हवाले कर दिया, और जितना मेडिटेशन करता गया मैं अपने आप को समझते गया और अपने आप से जुड़ता गया। कई लोगों को इसलिए अपने अंदर खालीपन लगता है क्योंकि उनके में कोई कमी, कोई खालीपन है, अर्थात सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर ये आप अपने सेल्फ से भर लेंगे, अपने सेल्फ को भर लेंगे प्यार से और स्वीकार भाव से, तो आपकी सेल्फ हीलिंग खुद ही कंप्लीट हो जाएगी। इसके द्वारा, सेल्फ हीलिंग के द्वारा हम इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं, स्टेबल रहते हैं और बैलेंस रहते हैं। हमारी बाहर पर कोई भी निर्भरता नहीं होती। हम हर स्थिति, हर क्षण में, हमें जो भी कठिन परिस्थिति हो तो भी हम समझ जाते हैं कि हमें यहाँ पर क्या सीखना है, पर हम बैलेंस रहते हैं और बाहर का कोई भी चीज हमको प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी चीज हो रही है वो हमारे भले के लिए हो रही है। इसीलिए हम संतुलित रहते हैं और इसके लिए मेडिटेशन जरूरी है। मेरे पास भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मैं बहुत खुश था, और अभी भी मैं बना सकता हूँ बहुत सारे फ्रेंड्स, पर मुझे मालूम है कि ज्यादा दोस्ती से ज्यादा निराशा आती है, क्योंकि कभी समय आएगा कि वो अपने घर चले जाएंगे या मुझे अपना समय नहीं देंगे, तब मेरे अंदर खालीपन लगेगा। तो इससे अच्छा है
इससे अच्छा है कि अपने आप से जुड़ जाना। No, जब I भी was saying that before meditation. हाँ, बिफोर में, हाँ। तो मेडिटेशन के पहले इनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, और वो जब उनके साथ No, रहते। before meditation, I voluntarily wanted more friendships to fill the void within me. अच्छा, I made efforts हाँ, looking ओके outside. ओके। Relationships, through relationships, I want to fill the friendship. I want to fill the inner void. ओके सर, आई मिस दिस पॉइंट। तो सर कह रहे हैं कि मेडिटेशन के पहले जो मेरे अंदर खालीपन था, उसके लिए मैं बहुत ही इच्छा से अपने कई दोस्त बनाता था, उनके साथ खुश रहता था, और मुझे बहुत निराशा होती थी जब वो घर चले जाते थे या मुझे समय नहीं देते थे। मुझे खालीपन लगता था, और इसके लिए ही मैं डीप मेडिटेशन की तरफ जाने लग गया। अक्सर ऐसा होता था कि छुट्टियों में हम जाते थे दोस्तों के साथ, खुशियां मनाते थे, पर वो हॉलीडेज खत्म होने के पहले ही मैं दुखी होने लग जाता था, क्योंकि इनको मालूम था कि जब सब फ्रेंड्स चले जाएंगे तो इनको खालीपन लगेगा। इसी के कारण ही मैं मेडिटेशन में आया, और अब मैं खुश रहता हूँ, और बाहर के किसी भी अन्य रिलेशनशिप या किसी भी फ्रेंडशिप पे मैं डिपेंड नहीं करता हूँ। मैंने अपनी पृथ्वी पर अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीख लिया और खुश रहना सीख लिया। इसके पहले मैं पृथ्वी और पृथ्वी के लोगों की सिर्फ शिकायत ही करता था। अब मुझे समझ में आ गया कि पृथ्वी पर जन्म लेकर इस यहाँ पे यात्रा करना एक अवसर है, और बाहर। Sorry to interrupt, madam. So हाँ, what I was trying to say was, before I was dependent on the relationships. I was having expectations. I was having expectations through the friendships, but that is not real friendship, because I wanted to fill my void, right? I'm feeling empty. So through relationships, I want to be a nice person. So I was a nice person with everybody so that they can be nice to me. They can be loving to me. So I was looking for external relationships to fill my void, but it never filled my void. And all my friendships in before meditation was not real friendships. Now I know, because I was expecting something. Whenever you expect something, the friendship is not possible. So after coming into meditation, I understood those things. So the point I was trying to tell was, I was looking for relationships to fill my void. तो सर कह रहे हैं कि जब मैं मेडिटेशन के पहले अपने दोस्तों के साथ जाता था घूमने, या फ्रेंडशिप करता था, या रिश्ते रहते थे जो भी उनके साथ, तो वो सब मैं अपने अंदर के खालीपन को दूर करने के लिए उनसे दोस्ती करता था। मेरी अपेक्षाएं रहती थी कि वो मुझे खुश रखेंगे, मुझे प्यार करेंगे, और इसलिए मैं भी नाटक से उनको खुश रखने की पूरी कोशिश करता था कि वो मुझे प्यार करें। तो जो वो मेडिटेशन, वो जो फ्रेंडशिप थी, एक स्वार्थ के कारण की एक्सपेक्टेशन कि मेरा अंदर का खालीपन भरे, वो मेरी सच्ची दोस्ती नहीं थी। सच्ची दोस्ती तब होती है जब आप कोई भी सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है सर। तो मैं अपने आप से जुड़ता गया, और मेरे लिए बाहर कोई भी वो नहीं मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहने लग गया। फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकली हीलिंग का अर्थ, हीलिंग के लिए आपको मेडिटेशन और बुक्स सबसे ज्यादा सहायता करती हैं। बुक्स आपको मोटिवेट करती हैं अपने मेडिटेशन की तरफ जाने के लिए। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तब 2.5 साल अपने आप को मेडिटेशन की तरफ ही लगा दिया था। मैंने अपना जॉब भी छोड़ दिया था। मेरे खर्च बढ़ते जा रहे थे, मेरे ऋण भी बढ़ते जा रहे थे। वहां पर खाने पीने और अपने बिल्स देने का इंतजाम खुद करना पड़ता है। वहां पर कोई भी ऐसा आश्रम नहीं रहता जो आपको खाना प्रोवाइड कर सके। मुझे पैसों का प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि ऋण बढ़ रहे थे, पर मैंने ये मन में ठान लिया था कि जो भी होगा मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा जब तक मैं समझ न लूं कि मैं कौन हूं। अगर मैंने अपने आप को नहीं समझा कि मैं कौन हूं, तब तक के मेरा जीवन व्यर्थ ही रहेगा। कई लोगों के लिए हीलिंग फिजिकल हीलिंग के बराबर होती है, जैसे नीता ने अपने शरीर के कुछ बीमारियों को ठीक किया। कई लोग साइकोलॉजिकली अपने आप को ठीक करते हैं। जो भी तरीका हो, जो भी आपके पास परेशानी हो, सबका इलाज, सबका रास्ता एक ही तरफ है, मेडिटेशन। तो जो भी हम आपको सिखा रहे हैं वो गोल गोल करके सिर्फ आपको मेडिटेशन की तरफ ही प्रेरित कर रहे हैं कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, उतना आप अपने आप को समझते जाएंगे।
ओशो ने भी बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट दिया है कि जब तक कि मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते कि आप अपने जीवन में क्या चीज मिस कर रहे हो। सज्जन सांगत्य भी हमें मोटिवेट करता है मेडिटेशन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास बुक्स थी और मैं एक बिल्कुल सन्यासी की तरह रहता था, पर मैं अपने आप से ही बातें करता था, पर बुक्स मेरे साथ एक एनर्जेटिकली कनेक्शन था। एक ऑथर से मैं बात करता था, एनर्जेटिकली कनेक्शन, पर वहां पे सज्जन सांगत्य की कमी थी। आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा एक बोनस है कि जूम सेशन है और दूसरे भी प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अगर कोई डाउट हो या संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अकेले ही अपनी यात्रा शुरू किया था। 2.5 साल तक के मैंने अपने आप से ही अपने आप को ही क्वेश्चंस जो मेरे अंदर उठते थे उसको समझाता था। 2.5 साल के बाद मैं पीएसएसएम से जुड़ा, पर पत्री सर का भी मेरे से मिलना कोई बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता था और पत्री सर छोटे छोटे सवालों के जवाब देना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं उनसे पहली ही मीटिंग में सिर्फ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद मैंने उनसे क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, क्योंकि जो भी मेरे अंदर प्रश्न उठते थे उनका आंसर भी मेरे अंदर ही था। तो जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, आपके अंदर आपके आंसर आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। और ज्ञान भारत आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो न्यू कमर्स हैं, ताकि अपने आप को समझ सके। So I want to share this Sajjana Sangatya between, this is a debate between Avayar and Lord Subramanya Swami. Avayar is a very learned lady from Tamil Nadu, thousands of years ago. She lived in Tamil Nadu, a very enlightened lady, very learned scholar. So Lord Subramanya, who is the son of Shiva and Parvati, so he comes and he asks certain questions to her and she responds. So this is a question answer session between an enlightened master and Lord Subramanya Swami. So the first question he asks, what is the rarest thing in the world? What is the rarest thing in the world? And she answers, rare is to be born as a human, and much rarer is to be born without any disabilities. And even rarer is to obtain knowledge and education. And much rarer is to do charity and meditation. And if one does charity and meditation, charity means dana. If one does charity and meditation, the gates of the higher realms, the God's heaven, would open automatically. So you see the intensity of the answer. Rare is to be born as a human. Much rare is to be born as a human without any disabilities. Much rarer is to have knowledge and education without being born as healthy, and also to have knowledge and education is much rarer. And much rarer, the rarest of the rarest, is to be a meditative person and also to do dana, service, charity. So when you are doing meditation and when you are doing charity, that is the rarest thing. Not many people have that opportunity. But when you have that opportunity, when you have the opportunity to do charity, you have to do charity. When there is an opportunity to do meditation, you should do meditation. Some people, they know how to do meditation, but they don't do meditation because they are not sincere and serious. And she also explains that if you do meditation and if you do service, dana, when you do meditation and if you do service, then what happens? Then very naturally, the gates of the gods adore, like, the higher realms will automatically open. So which means that becomes your final lifetime. You don't need to be born again. You merge with God. Yes, ma'am. There are a few other questions. I will. First question, yes. सर, अवयार एक बुद्धिमान, क्या बोले आपने, learned? Avayar is she's an enlightened lady. She is a very old lady, enlightened, knowledgeable, educated lady. And her specialty is she will speak the truth in the shortest possible, straight, simple, short, straight. That is her specialty. Or Lord Subramanya Is a son of Shiva.
सर बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर एक कन्वर्सेशन लेके आए हैं। अब यार, एक एनलाइटन लेडी है, बूढ़ी औरत है और बहुत ही बुद्धिमान पढ़ी लिखी औरत है। वो बिल्कुल सत्य को सटीक शब्दों में जवाब देकर बताती हैं। और लॉर्ड सुब्रमण्य शिव के पुत्र हैं और वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि इस दुनिया में दुर्लभ चीजें क्या है। तो वो बताती हैं कि दुर्लभ मानव जन्म है, दुर्लभ बिना कोई कमी के पैदा होना है, अर्थात निरोगी काया के साथ आपको पैदा No, होना। rarer means much more rare than हाँ, being born as a human. हाँ, तो मतलब दुर्लभ मानव जन्म लेना है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ जन्म आपका निरोगी काया के साथ होना है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ आपको नॉलेज और शिक्षा प्राप्त करनी है, ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करनी है, उससे भी ज्यादा दुर्लभ है आपका मेडिटेशन करना और दान करना। अगर कोई व्यक्ति दान और मेडिटेशन एक साथ करता है तो ईश्वर के साम्राज्य में यानी कि हायर रेल्म्स में उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। सर कह रहे हैं कि कई लोगों को मालूम है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, पर उसके बावजूद वो नहीं उसको रोज प्रैक्टिस करते क्योंकि वो सिंसियर नहीं है। तो जब भी आपको अवसर मिले मेडिटेशन का तो आप मेडिटेशन करिए, और जब भी अवसर मिले, जो भी आपके जिंदगी में कुछ पल ऐसे मिल जाएं जहां आपको दान करना हो, तो वहां पर बिल्कुल दान करें, तो आपके लिए गेट खुल जाएंगे। You see, I want to speak a little bit about charity, Dan. Many people who go through suffering, they want to come out of the suffering. The quickest way to come out of suffering is to do more good karmas. One is meditation. Meditation is the key. Along with doing meditation, whatever you have in excess, you share with the people. If you have time, you teach meditation with other people. Whatever you know music, you teach music. You know mathematics, you teach mathematics to the poor students. You have money, excess money, you give that money to the people who need it. Okay, so the more you do good karmas, the more you come out of the suffering. The self-healing becomes faster. So because the topic is self-healing, so you have to understand, write it in bold letters. Along with meditation, the more you do good karmas, the more you heal faster. So this is what Avayar is saying. The more you do meditation and the more you do charity, the more the gates of the heavenly worlds will open for you. If you do only meditation, then the gates won't open. So you have to do meditation and charity, both together. Then the gates of the higher worlds opens. So the opening of the gates of the higher worlds means you go back home. That becomes your final lifetime. तो सर कह रहे हैं कि आज मैं आप लोग को चैरिटी के बारे में बताता हूँ, दान के बारे में, कि यदि आपको कोई कष्ट है या पीड़ा है और आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो अपने गुड कर्मास को आप बढ़ाते जाएं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, पर आपके पास इसके अलावा जो भी कुछ अतिरिक्त है उसको आप दान करिए। अगर आपके पास समय है, आप संगीत में अच्छे हैं, मैथ्स में अच्छे हैं, या मेडिटेशन आपको अच्छे से आता है, तो आप उसको ही सिखाइए। और यदि आपके पास पैसे एक्स्ट्रा हैं, मतलब एक्सेस में है, तो आप उसको दान करिए। जो भी आपके पास है उसे बांटना सीखिए। जितनी ज्यादा सफरिंग है और आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग फास्ट हो, तो आपको गुड कर्मा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग बोल्ड लेटर्स में लिख लीजिए कि मेडिटेशन प्लस गुड कर्मास इज इक्वल टू सेल्फ हीलिंग फास्टर हो जाएगी आपकी। और जब आप ये दोनों साथ में करते हैं तो आपके जीवन के अंतिम जन्म में रहते हैं, क्योंकि इसके बाद आप मुक्त हो जाते हैं। Okay. Now let us go to the second question. He asked many questions, it's a Sajjana Sanghatya. So he asked the second question, what is the worst thing in the world? The first is, what is the rarest thing in the world? So the second question he asks is, what is the worst thing in the world? So then she answers, the worst thing is poverty. Even worst is the poverty in the childhood. And much worse is to suffer with incurable diseases.
And much more worse than that is to live a life with a wife without love. And much more worse than that is to eat the food cooked by her. So this is how she answers for what is the worst. Now, this is very important to understand. People, they live in toxic relationships because of the programming of the society, or because of the, whatever the wrong understanding, because of the lack of spiritual education, because of ignorance. They continue to live in toxic relationships. They live in toxic relationships because their own relationship with the self is not healthy. So it's nothing to do with the other person. When your relationship with yourself is not healthy, when you don't love yourself, naturally you will attract the people in your life which is unpleasant. So here she mentions about wife because woman is more sensitive. You can take it as woman or man. To be in a relationship without love is the worst thing possible. And much more worse is to eat the food cooked by them, served by them. So now you understand how important the relationships are. Your relationship with yourself determines what relationship you attract. You can say, sir, what to do? I've been already married and I've been living for more than 20 years. Now, what can I do? You don't need to do, you don't, I'm not recommending you to change the partners. All I'm trying to say is you have a better relationship with you. The more you start loving yourself, the more you don't have the expectations from your partner, the more you are complete and filled within yourself. You are fulfilled within yourself. When there is no expectations, then your partner also responds positively. Your partner also should go through the conscious shift. And when you are so happy by yourself in meditation, your partner also naturally wants to do meditation and become a better person. So the worst thing possible is to be in a relationship without love. Here, the relationship is self-relationship. First is the self-relationship, and then is your partner. Yes, ma'am. तो सर बहुत ही सुंदर दूसरा भी क्वेश्चन बता रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि इस दुनिया में बदतर क्या है। तो बदतर वो है, गरीबी बदतर है, और उससे भी ज्यादा बदतर है कि जब वो गरीबी आपके बचपन में हो। इससे भी ज्यादा बदतर सिचुएशन वो है जब आपके पास एक ऐसी बीमारी हो जो ठीक नहीं हो सकती, असाध्य रोग जिसको हम कहते हैं। और बदतर वो भी समय है जब आप एक ऐसी बीवी के साथ रहते हैं जिसको आप प्यार नहीं करते, और उससे ज्यादा बदतर है कि आपको वो खाना खाना पड़ता है जबकि आप उससे प्यार नहीं करते और उसका बना हुआ खाना आपको खाना पड़ता है। तो सर कह रहे हैं कि यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि हम बहुत लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही रहते हैं। ये इसके कारण है क्योंकि हमारे समाज ने हमारी धारणाओं को, हमारी प्रोग्रामिंग को इस तरीके से कर दिया है कि हम समझ नहीं पाते, हमारी गलत समझ होती है, हमारे में अज्ञान होता है, और हम इनटॉक्सिकेट मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं क्योंकि हमारा खुद के साथ ही कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। जब हमारा खुद के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है और हम खुद से प्रेम नहीं करते, तो ऐसे लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं अपने पार्टनर के लिए जो हमारे समान ही खुद से प्यार नहीं करते हैं। मतलब आप सेम वाइब्रेशन के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, वो आपके लिए अप्रिय रहेगा। तो ऐसे रिलेशनशिप जिसमें प्यार नहीं रहता वो बहुत ही टॉक्सिक रहता है, और उस समय जो वो वाइफ जो खाना बना के देती है वो आपके लिए और नुकसान करता है। तो आप समझिए कि रिश्ते कितने जरूरी हैं, प्यार के साथ होना मतलब बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको मेहनत करनी है कि आपको अपने साथ रिश्ता अच्छा बनाना है, नहीं तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहेंगे। अगर आपकी 20 साल पहले शादी हो चुकी है और आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो मैं आप लोगों को अपने पार्टनर को बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप इस रिश्ते को प्रेमपूर्ण बना सकते हैं।
कोई आप अपेक्षा मत करिए और अपने मेडिटेशन के द्वारा अपने आप से रिश्ता अच्छे से जोड़िए। आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपका पार्टनर भी, उसकी भी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगी, वो भी मेडिटेशन करना चाहेगा। और यदि दोनों मेडिटेशन करते रहेंगे तो आप लोग बहुत ही प्रेमपूर्ण रिश्ते में रहेंगे और ये रिश्ता अच्छा रहेगा और आप सुखी रहेंगे। तो सभी रिलेशनशिप के लिए संभावना यही है। अगर अच्छी रिश्ता चाहते हैं तो ये संभावना है कि आप अपने साथ अच्छे से रिश्ता बनाएं और फिर आपका पार्टनर वैसा ही हो जाएगा। You see, it can be other way also. Either way, it is good for you. The more you have self-love, the more you go through the self-healing, the more the possibility your partner also starts responding. That is one possibility. The other possibility, the more you start loving yourself, and if a partner is not ready for self-love, your partner will leave you and you will find a new partner, a better partner. So in either way, it is beneficial for you. Without you making any effort, your partner will go automatically and you will attract a better one, a much more beautiful one. So either way, it is good for you. So you focus only on meditation. Everything is good. तो सर कह रहे हैं कि इस मेडिटेशन के द्वारा आपको दोहरा लाभ है। अगर आप अपना प्यार बढ़ाते हैं, अपनी सेल्फ लव को बढ़ाते हैं, तो आप जब अपने आप से प्यार करेंगे तो आपका पार्टनर भी आपको प्यार करने लग जाएगा और आपका रिश्ता बहुत ही प्रेमपूर्ण बन जाएगा। और यदि आप अपने आप को तो प्यार कर रहे हैं पर आपका पार्टनर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, रूपांतरण उसका नहीं हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से दूर चला जाएगा, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में, वो लो वाइब्रेशन में, तो वो भाग जाएगा आपको। तो बिना कोशिश करे आप, मतलब वो आपकी जिंदगी से चला जाएगा और आप अपने वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल और इससे ज्यादा बेहतर इंसान पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। तो फोकस करिए सिर्फ मेडिटेशन पर। Okay, now let us go to another question. How are the questions? Good? Very nice, sir. Very nice. Yes. So the next question, the first question is, what is the rarest in the world? The second question is, what is the worst in the world? The third question he will ask is, what is sweeter? What is the sweetest thing in the world? Then she answered, sweeter is to be in silence and to be in aloneness. You see, we do silence retreats. To be in silence is the sweetest thing. People say, sir, we need to have some fun and silence. I say, silence is the fun. Silence is the sweetest thing. And to be in silence, to be in aloneness is the sweetest thing for the soul. And much sweeter is to be connected with the self. Means much sweeter is to be in deep meditation. And much more sweeter than that is to be in the company of truth seekers and knowledgeable people in the dreams and also in the reality. So that means to have friendship with a fellow truth seeker, to have friendship with an enlightened person, not only in the physical reality, even in the dreams, they are with you. So that is the sweetest thing ever possible. So sweeter is to be in silence and in aloneness. Much more sweeter is to be deeply connected with the self. And much more sweeter is to be in the company, Sangam Saranam Gacchami. Sangam, you are in the Sangha of truth seekers. That is the sweetest thing possible. In reality and also in dreams. So when would somebody be in your dreams? When you have a very good friendship with that person, when you know that, you spend your time, your energy only with enlightened people. With the people who are not enlightened, that means you don't gossip. You practice upeksha. Upeksha means indifference. You practice indifference with the people who are not sincere towards knowing the truth. In the planet Earth, there are many, many people, all kinds of people are there. People who are looking for money, people who are looking for name, people who are egoistic, and people who are looking for truth. So with all the other categories, your
following upeksha, indifference. But with truth seekers, you make quality friendship. Then those kind of people will be there in your reality and also in your dreams. That is the sweetest thing ever possible on the planet Earth. Yes, madam. तो सर कह रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे मीठी बात, मीठी बोलेंगे ना सर, स्वीटर को, अच्छी बात या बहुत ही सर्वश्रेष्ठ या मीठी बात क्या है? स्वीटर का मतलब मुझे तो उतना ही समझ में आ रहा है। अच्छी नहीं, मीठी, स्वीटर, स्वीटेस्ट. हाँ हाँ, तो like सर the soul is बात rejoicing, the soul is tasting the sweetness. अच्छा, स्वीटनेस तो मतलब मीठी बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि मौन और एकांत होना बहुत मीठी बात है। एकांत मतलब जब आप अपने आप से खुश रहते हैं। अकेलापन हम उसको कहते हैं जब आप किसी के एब्सेंस में दुखी होते हैं। तो यहाँ अकेलापन नहीं, अलोननेस यहाँ पे बोल रहा है, पर वो एकांत के लिए बोल रहा है। आप अपने आप में खुश हैं। उससे ज्यादा मीठी बात है जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं। और मीठी बात और भी है जब आप ट्रूथ सीकर, जो सही में सत्य के एस्पिरेंट, मतलब उसके जो अनुयायी हैं, उनके साथ जुड़ते हैं और उनके साथ नॉलेज लेते हैं, न केवल पृथ्वी पर बल्कि ड्रीम में भी। तो सर कहते हैं कि सपने में हमारे रियलिटी में जो दोस्त होते हैं, उन्हीं से ही सपने में भी मिलते हैं। ये नियम नहीं, ये नेचर का लॉ है। तो अगर आप ट्रूथ सीकर हैं और आपके दोस्त लोग भी इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उनके साथ ज्ञान लेंगे, बातें करेंगे, और वो आपको इस पृथ्वी पर तो एनलाइट, मतलब आपको मदद करेंगे ही, खुशी देंगे ही, मीठापन देंगे ही आपके जीवन में, और साथ ही वो आपके सपने में भी आएंगे। और सपने में भी वही लोग आते हैं जो हमारे पृथ्वी पर है, तो ऐसे ही एनलाइटेड लोग आएंगे और आपका विकास होते जाएगा। सर ने कहा है कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अहंकारी हैं, या पद प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। हर एक तरह के लोग हैं। तो आपका काम सिर्फ इतना ही है कि ऐसे लोगों को आप की उपेक्षा कीजिए। बुद्धा ने भी कहा है उपेक्षा, तो वो है कि इनडिफरेंस, जिसको उपेक्षा, इग्नोर कर देना है। सिर्फ ट्रूथ सीकर्स के साथ ही आप क्वालिटी फ्रेंडशिप करिए, एक अच्छी गुणवत्ता वाली दोस्ती करिए, ताकि आपके ड्रीम्स और जीवन में वही रहें। Okay, so the questions goes like this continuously, and then the next question is like, what is the newest thing? What is the newest on the planet Earth? Then she says every moment is new, every second is new, because every moment there is an opportunity for learning, every moment there is opportunity for a new beginning. So the newest thing is need to be in the present moment, because it is in the present moment there is something new possible. So like that the debate goes on. So this is the Gyaan of Bharat, India. Right? There are so many enlightened masters for thousands and thousands of years. She was there in Tamil Nadu. She is part of in Tamil Nadu. For thousands of years ago, she lived in Tamil Nadu. And that holds the true same today also. And what we do in our retreats is only this: make the people to be in silence, make the people to be in deep meditation. And also there is a lot of Sajjana Sangatya. Okay, there is, and also when you come for the retreats, there is a lot of friendships which will happen, friendships of the fellow truth seekers. So what we do in the retreats is the sweetest thing possible we do. And I don't know about this Avayar's teaching. Very recently I discovered, but this is what we do in the retreats. तो सर कह रहे हैं इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं। उसमें से एक क्वेश्चन है कि इस दुनिया में सबसे नई, मतलब इस दुनिया में नई चीज क्या है? तो उन्होंने कहा, लेडी ने कहा कि हर क्षण, हर पल आपका पृथ्वी पर नया है। हर क्षण में आप नई चीज सीखते हैं, हर क्षण में आप नई शुरुआत कर सकते हैं। तो हर क्षण आपके लिए नया है, और ये उनका आंसर था। और सर कह रहे हैं कि रिट्रीट में हम यही करते हैं कि अच्छे ट्रूथ सीकर लोगों से आपकी दोस्ती होती है, हम मौन साधना करते हैं, हम डीप मेडिटेशन करते हैं।
तो सबसे जो मीठी बातें वो जो बोल रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट होना, एकांत में रहना, मौन, साइलेंस, ये सब कुछ, फ्रेंडशिप, ये जो तीसरा आंसर था स्वीटर वाला, वो पूरा हम रिट्रीट में भी वही करते हैं। ये लेडी ने 1000 साल पहले, तमिलनाडु की जो एनलाइटन लेडी हैं, उन्होंने 1000 नहीं, मुझे पता नहीं, आई थिंक few thousand years ago, few thousand years. अच्छा अच्छा, कुछ साल, कुछ हजारों साल ना, फ्यू थाउजेंड बोल रहे हैं सर? Yes. कुछ हजारों साल पहले उस लेडी ने जो ये आंसर दिया था, आज भी उतना ही समकालीन है, और हम रिट्रीट में यही करते हैं। Okay. And see, the reason I'm saying the new thing, every moment is new, because people are stuck in their emotions. People are stuck in their past experiences, and they destroy the present moment. So they are stuck in the old. There is no possibility of the newness. There is no possibility for the newness because they are not open for the new possibilities. They're not. Okay, there's some disturbance from Mamta Banerjee. All right. So some people, they have this programming, when I say some people, that means non-meditators. Okay. So the people who are not meditating, they are stuck in their childhood programming. They are stuck with their own expectations. So they are not open for the new possibilities. You see the water, when it is stagnant, it becomes spoiled. But the running water, the flowing water is always pure. एक मिनट सर, एक सेकंड सर। सर What's happening? पता नहीं सर, वो बार बार अनम्यूट हो जा रही है, तो मैंने उनको को-होस्ट से अभी हटा दिया है। शायद उनका हाथ दब रहा होगा, क्योंकि वो कुछ काम वाम कर रही हैं तो। Okay. So I don't know what I'm saying. The newest thing is पानी जब ठहर जाता है, yes, when the water is stagnant, it is spoiled. When the water is flowing, it always remains fresh and pure. Similarly, emotions are energy. Emotions are energy in motion. If you are not open to the new possibilities, when the emotions are not flowing, you are stuck with your old emotions. That means you are poisoning yourself. So every moment there is a possibility of something new. In relationships, it works well. Past is past, gatam gatam. Yesterday, your partner is not nice, but today is a new opportunity. This moment is a new opportunity. Every day is a new beginning. Every moment is a new beginning. Raat gayi to baat gayi. Gatam gatam. Past is past. So when you are able to live in the present moment, when you are open to all the newness in the present, then your life is forever new. You experience the newness of life. Okay, so this is the answer she gave. And especially for for women and men in the relationships, they are stuck. Even though the breakup happened, they are stuck for many, many more years and months. You should be open for new possibilities. Always you should be open for new possibilities, new opportunities, new relationships. Always. So when I say new relationships, don't misunderstand to look for multiple relationships. I'm saying in the same existing relationship with the existing partners, there is a new possibility of enhanced relationship, new relationship, a new loving relationship, new friendship. Okay, madam. तो सर ने कहा कि मैं न्यू के बारे में कह रहा हूँ, नएपन के बारे में कह रहा हूँ, पर कुछ लोग अपने इमोशंस में फंस जाते हैं। कई लोगों को अतीत की कुछ यादें ऐसे इमोशनली वो उसमें फंस जाते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी नयापन नहीं रहता। कुछ ऐसे लोग जो नॉन मेडिटेशन वाले हैं, मतलब जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, नॉन मेडिटेटर्स हैं, उन लोग या जिनके बचपन में
ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, तो वो उसमें फंसे रह जाते हैं, उनके अपने एक्सपेक्टेशन में वो फंसे रहते हैं और उनके जीवन में कुछ भी नई संभावना, मतलब सुधार की कोई नई संभावना नहीं दिखती। जब पानी ठहर जाता है तो वो खराब हो जाता है, जब पानी जब बहता रहता है तो वो फ्रेश और अच्छा रहता है। बिल्कुल, इमोशन का अर्थ ही होता है कि एनर्जी इन मोशन, मतलब हमारी जो एनर्जी बह रही है, तो उनको बहने देना चाहिए, उसमें फंसना नहीं चाहिए। जब आपका कोई अतीत खत्म हो गया जिसमें चाहे कितना भी दुख रहा, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ कुछ मुठभेड़ हो गई है, मतलब कुछ बातचीत हो गई है, कलह हो गई है, तो आप उसको भूल जाइए, रात गई बात गई। आप फिर से उसमें एक नयापन देखने की कोशिश करिए, एक ओपन माइंडेड तरीके से रहिए और हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए। जितना आप अपनी संभावना बढ़ाते रहेंगे नएपन की, उतना ही आप नए नए चीजों को अनुभव करते जाएंगे। औरत और मर्द चाहे कोई भी हो, वो अपने अतीत के रिश्तों में या उसके ट्रॉमा में फंसा रह सकता है। अपने रिश्ते के लिए आप ओपन माइंडेड रहिए, तभी आप बेहतर रिश्ता बना सकते हैं। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने रिश्ते को तोड़कर किसी दूसरे मल्टीपल पार्टनर्स या किसी दूसरे रिश्ते में चले जाइए। अपने ही रिश्ते में रहिए, परंतु एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करिए, और आप अपने ऊपर जब काम करेंगे तो आपके उस पुराने रिश्ते में भी एक मीठापन, एक लविंगनेस, एक न्यूनेस आएगा। Okay. So this is the debate between the son of Shiva and Parvati and Avayar. So now I will take one or two questions and then we will conclude this session. But please ask very meaningful question. The question should be very meaningful, very useful. When it becomes a meaningful question is when you ask a question which helps you and which helps others. That is a meaningful question. सभी फ्रेंड्स लोग सार्थक क्वेश्चन पूछें जिससे आपको भी फायदा हो और दूसरों को भी फायदा हो, और सटीक पूछें। तो हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। और मीनाक्षी, यूट्यूब में भी कई क्वेश्चंस हैं, देखना। तो देख रहे हो आप? नहीं, यूट्यूब में नहीं, मैं यहाँ पे हैंडल कर लेती हूँ। यूट्यूब में भी है, चलिए मैं देखती हूँ। ओके, मैं देखती हूँ, आप करिए, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ रजनी जी बोलिए। नमस्ते नीता मैम। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। नमस्ते। Yeah, for the people who ask the questions, you come on the video. वीडियो चालू कर दो बेटा रजनी। Okay, so I'll take 2-3 questions, not more than that. वीडियो ऑन करो, तो देखो नोटिफिकेशन आया होगा, उसको दबाओ तो वीडियो ऑन हो जाएगा। Okay, we'll go to the next one. दूसरा कोई हैंड रेज नहीं किया है। चैट में भी है मीनाक्षी। हाँ विजया, यस विजया जी। नमस्ते सर। नमस्ते नीता मैडम। मुझे एक क्वेश्चन पूछने का था कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं और वॉइड में जाते हैं, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो कुछ भगवान ने दे, शायद ये आपका सब्जेक्ट है, उसमें ही डेप्थ होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बीच बीच में सुनती थी कोई आ रहा तो जब भी हम सोचते कि हम लोग सभी जो कुछ भगवान ने दिया है हम एक्सेप्ट करते हैं और सरेंडर करते हैं गॉड को, तो ये दो चीजें करने के बाद ऐसे होता है कि जो मेरे सामने आता है शरीर, दूसरा आदमी, तो उसका मैं आत्मा चेतना देखती हूँ मैं उसमें। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि साधना करते समय हमें संभाल के रहना पड़ता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे पास नहीं आए। तो अगर सामने की आत्मा, सामने का शरीर नेगेटिविटी से भर गया हो तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए उस वक्त? आप समझ रहे सर मुझे क्या पूछना है? Where are you speaking from, madam? Introduce yourself. I am from Mumbai. I am from Mumbai. Okay, you're from Mumbai.
I think we answered all these questions in the past. Neeta, you answered it's about negative energies. We are least bothered about negative energies. In this wisdom session, we don't speak about negativity. Okay. What you speak, you attract it. Okay, we don't need to protect anything from negativity. You focus on your positivity. Okay. Okay, sir. Okay, sir. आप अपने में फियर एनर्जी मत रखिए, फिर मैं आपको आंसर दे दूंगी है ना विद सर. Yes, madam. Thank you. Yes, iPhone D मोनिका. हाँ, वीडियो ऑन करिए मैम जल्दी से. यस, नमस्ते. मैं साउथ अमेरिका चिली से बात कर रही हूँ और मेरे को मेडिटेशन में बहुत मजा आता है, पर कभी-कभी मन अशांत होता है. That is the nature of the mind. ओके. वो हमेशा ऐसे ही होता है, सबको ऐसे ही होता है. सर कैसे चेंज करें? You understand that is the nature of the mind. The mind always goes through ups and downs. Okay. So how do you work on it? Increase your soul energy. When you increase your soul energy, even the mind is going up and down, it doesn't disturb you. It doesn't bother you. So that's why meditation is very important. So, some people have this misunderstanding that, the more you meditate, the more your mind is always stable. No, the very nature of the mind is like a monkey mind. Mind is like the moon, keeps always changing. The moon changes every day. So the mind is like a moon. The body is like, the physical body is like earth. The effect of the moon is on the earth. So the effect of the mind is on the body. But your Atma is like the sun. The moon gets the energy from the sun. So you increase your Atma energy, then your mind and body, everything is in alignment. You have to understand the very nature of the mind is to keep changing. The very nature of the mind is to go this way, this way. So you understanding the very nature of the mind, you try to increase your soul energy. Then you are in Sthiti Pragnata. Okay? Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you. Yes, Survi ji. मैं सुरभि बोल रही हूँ. आई एम फ्रॉम एडिनबरा स्कॉटलैंड. सो मैं सर सेकेंड डे में आपने कुछ बताया था. यू टोल्ड दैट ओनली idiots कैन से दैट ओके व्हाटएवर कम्स लेट इट कम, विल जस्ट we'll just leave it like that, but old souls will think too much, like what is happening with me. So I didn't understand that, because sometimes they say you don't think too much. I don't remember. Did I say that? No, sir. You were talking about the depression. Only intelligent people can have depression. Yes. That is why you told that, no, sir? Yes. Because Survi, उन्होंने कहा कि idiots लोग mechanically रहते हैं. उसके point of view. Okay, maybe okay. So ऐसे मुझे लगा कि आपने बोला कि जो थोड़े से maybe new souls होंगे वो बोलेंगे कि okay, whatever comes, just let it be like that, because sometimes people say कि okay, don't think too much, if you don't understand, let it be like that. So what should we do? Because I get sometimes confused what to do in this situation. So I just keep quiet and I just accept whatever comes and I just go with the flow. Like for retreat, if you say, so I didn't go to India for like 4 years now. So there is still, I haven't got a chance to go to India to meet my parents. So I feel now what to do, go to retreat or go to meet to parents, because we have only 2 to 3 weeks and just go there and spend time. So I just wait, wherever my time will come, I'll go to retreat, but I want to go to retreat. So I'm confused with that thing, sir. Okay. So first of all, it's nothing to do with the new soul or old soul. Okay. So you have to understand, the old souls are the ones who look for the bigger picture of life, who look for what is the meaning of life. Young souls and all, they're very happy with whatever they are. They're happy with their money, name and fame, power. Okay. So you are definitely not a new soul, because if you're a new soul, you wouldn't be part of this Zoom session. Okay. If since you are part of the Zoom session and since you're asking this question, so that means you are an old soul.
So the definition of old soul simply means these souls have taken many, many lifetimes, and they are in the final stages of their soul evolution. That means there's only few more lifetimes before they become enlightened. So that is the definition of old soul. And for your question, what to do? Sometimes, you feel like going with the flow. Sometimes you feel like, yes, you have to take a decision and choice. This is the way it is for everybody. What to do, what not to do is $1 million question. There is no simple, straightforward answer. What to do, what not to do is $1 million question. That's why you need more meditation, so that you know what to do, you know what not to do. It depends on the time, situation, place. And it is very subjective. So the more you do meditation, the more you are connected to the self, the more you are guided by the self. Okay. So when you do more meditation, your self guides you through feelings. You will have a strong urge. You will have a strong feeling that, yes, I need to go meet my parents. So that means your soul is guiding you, your self is guiding you. But if you're not meditating, your soul is still guiding you, but you're not able to listen to it because you are stuck in your mind. So that's why it is very, very important to empty the mind. The more you empty the mind, the more you are connected to the self. The more you are connected to the self, the more you know what to do, what not to do. To go with the flow, always go with the flow. So whenever I say go with the flow, it simply means follow the heart. Yes. Follow the heart and just accept the things as they are. See, truth is always paradoxical. Sometimes there are situations in life where you don't want it, so you change it. You deliberately make an attempt to change it because you are guided by your heart to change it. So when you're guided by your heart to change it, you are still in the flow. Sometimes there are some things happening in your life and you say you surrender to that situation because it is not yet in your control. Yes. There are many things which are not in your control. So those moments you surrender. But there are moments which is in your hands. That moment you have to step up. Yes. Okay. So yes. What to do, what not to do should always be guided by your heart. For that, meditation becomes very, very essential. Yes. Thank you, sir. Just wanted to share one more thing, that how you said that when you do lots of meditation and then you enjoy everything, wherever, even if you're sad, you enjoy the sadness. And actually, when you do meditation, there is no sadness. No sadness, sorry. Whatever situation, you just analyze that situation and learn to stay in that situation happily or accept that thing. See, this is right? No, you first do meditation, then you will understand. Okay. Okay. You see, when you are doing meditation, there is no sadness in the first place. Okay. Sadness comes because you are stuck in the mind. Yes. When you are connected, when you are too much stuck in the mind, there is sadness. But when you empty the mind, you are connected to the heart, you are connected to the self. When you are connected to your Atma, then you understand why things are happening. Then you rejoice that experience. Okay. Yes. The mind has a classification: good experience, bad experience, ugly experience. For the soul, every experience is beautiful. Every experience is an opportunity to learn. Yes. So that's what I was. You first do meditation, madam. First, you do meditation before you ask any questions. Okay, sir. You first experiment. You experiment meditation sincerely for 40 days. You experiment and then you ask questions. Okay. Thank you, sir. Yes. Next question. Hello, sir. Good evening. Zigna from Nagpur, sir, Maharashtra. Yes, madam. Yeah. Yes. Sir, I have one confusion about emotions. There is a paradoxical situation, like you said, we don't have to suppress our emotions, and on the other side, you said that we don't have to react on any given point of the time. We just have to respond the things. So
if I am angry at the moment, I am angry at my child, so how I will मैं कैसे उसको ये सर वो सिचुएशन कैसे हैंडल करूंगी? Just I have to suppress my emotion or I should respond that situation? Well, inside me, You respond. what Always you respond. Always you respond to any situation. You respond. You should never react. Always you respond. So for your question, if you are angry at your child, whenever you feel angry at your child, you realize that moment when you're feeling angry, you realize that there is nothing wrong with the child. There is something wrong with you. You don't know how to handle it, and that's why you are feeling angry. okay. You are helpless in that situation. That's why you are angry. So when you understand, I'm feeling angry because I don't know how to handle it. So then you will start looking into how to handle the situation rather than focusing on the anger. Yes, sir. So this is responding. When you take responsibility and you don't react, then you are responding. Then you might speak, in a loving way. You might speak to your child. I'm very tired today. I don't have much energy to deal with this situation. So please understand. You can request her. Please understand. I want to take rest today. So don't trouble me. But Mama loves you. I'm really loving you. I always love you. But just today, you give me some time. Don't trouble me. So when you accept in front of your child that you are incapable to handle the situation and you need some space, the child will respond to you. That is how you deal with the situation. Then the child will have greater respect on you. Every parent thinks that they should be the best parents. How can you be the best parent unless you are a great meditator? And also there is another concept, spiritual parenting. There are some workshops and courses for spiritual parenting. In fact, the moment you are a meditative person, the parenting very naturally happens to you. You don't need to go for any courses. That is the real spiritual parenting. The real spiritual parenting is you are living in the moment to moment and you are responding to every moment. That is spiritual parenting. There is no rules and regulations in spiritual parenting. You respond every moment you respond to the given situation. Then you are in the spiritual parenthood. You are called a spiritual parent. For that, you need a lot of meditation. And it is very important for the parents to accept their mistakes in front of the children. It is very important for the parents to tell the children that they are not perfect. So that is the way you can have friendship with the children. You say, okay, I will help you as much as I can. You help me as much as you can. So let us be friends. Then the relationship becomes very beautiful. But the parents, they put a mask as if they are perfect and they know everything. The child also knows the parents don't know anything. So it's better to be authentic with your children. Your children will appreciate your authenticity. Yes, sir. Okay. No, thank you, sir. Yes. सर अब किसका लेना है बताइए सर. बहुत हैंड्स है. बहुत आंसर किया. Okay. Take one. Vishwanath Joshi ji. Yes. My query is, while doing meditation. Where are you from, sir? Sir, okay. Sometimes people ask the question, I'm an employee and you pay me the salary and say, my question is this, you answer. Sir, I am actually from Udaipur, Rajasthan, but at present I am in Mumbai. Okay. My question is, sir, that while doing the Anapanasati meditation, a state comes when there is a total breathlessness state. The breath totally stops. But however, the mind continue to work. So I get confused whether I am doing rightly, how this breathless state is there and still the thoughts are coming. So how to overcome this situation? There's nothing to overcome, sir. It is a very natural process in your meditation that first, actually, the thoughts reduces first, and then you
you feel there is no breath. You go beyond the breath. So the first stage is your thoughts reduces, and the second stage, the breath also becomes shorter and shorter, and finally the breath disappears. But you are saying the other way. So, are you doing Anapanasati? Yes, sir. I am doing for the last 1 year, and this state comes many times, and I feel highly embarrassed that there is a. Are you following any guided meditations? Are you following anything else other than being with your breath? Yes, sir. I have done many sessions of state wisdom, inner journey, and so many things. I have done it, and that is the problem. I have done your earlier session of 11 days also. I have done. This is my second with you. Yeah, when you do too many things, yes, sir, then you are heading for a disaster. So follow. What you do at this? Do an experiment. Yesterday, I think I was telling this. You just focus on one technique and sincerely and seriously follow that technique. Okay. So my recommendation is the recommendation of Gautama Buddha. My recommendation is a recommendation of Patanjali. Yeah. Just follow your natural breath. Don't do anything else. You want to save yourself? Do you want to be safe? If you want to be safe, then follow Anapanasati. If you practice too many techniques, thinking that you will get quick enlightenment, then that will get you into disaster. Where you are just a classic example where you cannot feel the breath, but the mind is active. Then what is the point of meditation? Right. Okay, sir. Sir, one thing more related to this. Is it this Anapanasati is synonymous to Ajapa Gayatri? No. Japa, mantra. Ajapa Gayatri. Ajapa means there is no sound, no mantras, no? No mantras. Yes. So, no mantras doesn't mean Anapanasati. Anapanasati simply means you are with your breath. Sir, in Ajapa Gayatri also, when there is a inhalation, there is a natural sound of hum, and when there is exhalation, there is a natural sound of cha. Really? Really? You feel that sound? You hear that sound? Sir. Yes, sir. Okay, sir. Then you follow that. But in my experience, there is no sound when I'm with the breath. If you believe that there is a sound when you're breathing, then I think you are. I think you please speak to Neetaji personally. I think you need counseling. I think you are heading in a wrong direction. Okay, sir? Yes, sir. Yes. You definitely need help. Yes, sir. These are the consequences of when you don't know what is meditation, and when you don't know what is not the right meditation, and when you follow the techniques which is not scientific, people will head into disaster. And it takes much more time to reverse it. If you learn something which is not the right, it takes much more greater time to reverse it. So you definitely need help. So you please contact Gyaan Bharat and take their counseling. That will help you. But sir, I am actually doing Anapanasati. This is only. Okay, sir. I think I answered your question. Okay. I answered your question. Thank you. सुशीला जी को ले वो सुशीला जी से ले. Yes. Yes, Sushila ji. Neetaji, you have a great responsibility, no? Sir, what's happening? Hello. Sir, many Zoom sessions are available on YouTube and in every group, sir. मैं अपने ग्रुप में नहीं डालने देती हूँ. सुशीला जी, एक मिनट सुशीला जी. But people get many links from other groups. That is why they go non-stop, sir. Continuously 3-4 sessions in a day. Every time I speak them, ki
एक ही चीज करो और ज्यादा मत जाओ, बट Okay, maybe in the beginning of your session, every day you begin the session, you just teach what is the right technique of meditation. That will help the people. Okay, sir. मतलब 2-3 minutes I have to speak. Yeah, 2-3 minutes you speak what is right, what is scientific, what is, so that I think it helps the people. Because more and more when new people are coming in and joining, so I think it helps them. Yes, sir. I want to make some videos for the right meditation, etc. But sir, because of temptation, sir, there are so many Zoom sessions now. Non-stop, 24 hours it is running. Okay. Okay, that's fine. That is, it is like this. When you are in level D, you attract the level D teachers. When you are in level C, you attract level C teachers. So you attract whatever the teachers you attract is depends on what level you are. So when people are interested in enlightenment, so they attract the right person. So that's okay. We are not here to blame anybody. But at least in your session, you have to speak the truth every day before you start the meditation for 1 minute, 2 minutes. You speak what is the right meditation, and that will help the people, I guess. Okay, sir. Okay, sir. I will do it. Yes, thank you. Thank you. Sheila ji. हेलो सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार। मैं फिजी से बोल रही हूँ। फिजी से। Sometimes you are in USA, sometimes you are in Fiji. अभी रात को और मैं स्पेशली आज इतना एंजॉय किया, मैंने इतना एंजॉय किया और स्पेशली थैंक्स चाहती हूँ आपको कि जो ये देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो भी जाने की। मैं भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के जब आपको मिली तब से जो मेरी लाइफ 360 घूम गई है, तो अब तो मैं एकदम खुशी रहती हूँ। और ध्यान होता करती नहीं है, ध्यान होता ही रहता है। अब जाती हूँ थोड़ा काम करके तो बैठ जाती हूँ आंखें बंद करके, फिर एनर्जी आ जाती है। फिर तो लाइफ इतना सुंदर हो गया है, इतना सुंदर हो गया। सो मेनी थैंक्स, क्योंकि मैं भी इतना वो इल्यूजन में थी। और ये आपके जो 44 डेज में करा सेशन, इसके बाद सब निकल गया। और जो मैंने पाया आपके पास से, वैसे कुछ मुझे दिखाता नहीं है, लाइट नहीं दिखी, कलर नहीं दिखता, कुछ दिखते नहीं, लेकिन मैं खुश हूँ, इतना मैं जानती हूँ, हैप्पी हूँ। और अभी 78 की हूँ, फुल स्विंग, एकदम हैप्पी, एनर्जेटिक, गरबा भी करके आई, सब कुछ, वो उसमें कुछ कमी नहीं आई है। और आपका आज का सेशन तो मुझे बहुत बहुत बहुत, मैं तो हंस रही थी पूरा सेशन में कि क्या बात है। वो सब बात जो मैंने कभी पूछी थी, वो वाली सब बात चल रही है। तो वेरी गुड सर, आपकी नॉलेज इतना सिंपल, इतना सिंपलिस्ट आपने कर दिया है, कोई के भी समझ नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर माय हेल्प एंड Yes, madam. Yes, your words are always very beautiful, like you. Thank you. And I love you. Yes, likewise. Yes, sir. So we'll take one final question. Asha. हेलो सर। Yes, मैं madam. फर्स्ट टाइम आपसे इंटरेक्ट हो रही थी, मैम के थ्रू ही आपका इंट्रोडक्शन। कहाँ से मैडम? मैं औरंगाबाद से हूँ। Yes. सर आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक तो मेरी फैमिली में मैं हेल्थ इश्यूज बहुत देख रही हूँ, बहुत ज्यादा देख रही हूँ। मतलब मैं पहले 7 इयर्स बैक मैंने ब्रेस्ट कैंसर से फाइट किया, देन आफ्टर 3 इयर्स फिर मेरे हस्बैंड को अटैक आया, एंजियोप्लास्टी हुआ, देन अभी मेरी मदर इन लॉ को माउथ कैंसर हुआ है, और एक बार सर्जरी हुई और लास्ट वीक एक छोटी सर्जरी वापस से हुई। रिपीटेड ये हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं हमारी फैमिली में, ऐसा क्यों? Because of karma. How many lifetimes karma? Do you know how many lifetimes you have done what kind of karmas? You are paying back. There is a simple understanding. Okay. See, don't think I'm not compassionate. I'm really compassionate. There is a simple understanding. If a person has too much bad karma,
that means he has to pay the consequences through suffering and illness. If a person is suffering with physical illness, then that means the karmic clearing is happening. The lot of karmic baggage is there. So you are asking this question that my whole family is suffering. Why it is happening? It is happening because of the karmic payback. So now your question should be, what should I do now? या वो वही था, मतलब करने वाली खाली मैं ही हूँ, बाकी कोई भी नहीं एफर्ट्स डालेगा, जो भी करना है मुझे ही करना है. Yes. So what should you do is what I told before. Do more meditation and do more good karmas. Only that alone will help you to come out of all the karmic baggages. Do more meditation and do more good karmas. Very simple. ओके. और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे कैसे पता चले कि ये मेरा कार्मिक है या मेरा है ना तो बर्थ प्लान है. Both are the same. Only when there is karma, you plan that in your soul plan. Okay. Both are the same. See, because you have to neutralize a lot of karma, because you have a lot of negative karma in your baggage, you plan in your soul planning that you plan the illness, you plan the challenges. Everything depends on the karma only. Your soul planning happens based on your karmic account. Okay. 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 और सर ये मतलब अभी मेरे मदर इन लॉ तो नहीं कर पाएंगे, उनको मैंने सिखाया, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने 2-3 दिन किया, लेकिन वापस से वो मटेरियलिस्टिक में. You don't focus on others, focus on yourself. Apo Deepo Bhava. Only you can help yourself and your mother-in-law can help herself. You cannot help your mother-in-law. You cannot help anybody. You can help only yourself. So focus on yourself. मुझे खाली मेरे लिए खुद के लिए मेडिटेशन करनी है. Yes. ठीक है सर. Okay. ओके. Yes. ठीक है सर. थैंक यू सर. Yes, all right. सर ममता बनर्जी कुछ कहना चाहती है. Yes, Mamta ji. Mamta Banerjee ji. Yes. So there's one more. Mamta ji, before I get back to you, I think there's one lady, me too. So we'll take her. She's on the video. Quick Yes. question. I hope you ask a meaningful question. गुड इवनिंग सर. Yes, मैं madam. नीतू पासोरिया वियतनाम से. कहाँ से? वियतनाम में? हाँ, अभी चल. वियतनाम में हूँ. You relocated? या Okay, very good. तो मैं ध्यान कर रही थी, तो ध्यान में सुबह भी ऐसे ही आया, अभी भी ऐसे ही आया. पहले तो योगी दिखे, फिर उसके बाद मैं जब देख रही हूँ ध्यान में, तो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मुझे कोई आगे बोलता है कि कब तक इस अर्थ में फंसे रहोगी तुम, इससे बाहर निकलो. तो सुबह भी यही चीज आया, अभी भी यही. तो इसका मतलब क्या है, तो मैं जानना चाहती हूँ. I ask a meaningful question. Is it a meaningful question? So because I don't Okay, know. your chance is over. Okay, next, Mamta ji, आप बोलिए. नमस्ते सर. नमस्कार मैडम. You are in full glow. देवी का एनर्जी आ गया आपका ऊपर. Yeah, Durga Puja is going on. I'm coming from there only. Okay, okay. I have not changed my clothes. I am just in the session. You are looking wonderful, madam. Thank you, sir. Sir, lots and lots and lots of gratitude what you have done for Shivra Pyramid. And I want to declare this. Sir has deposited 1 lakh rupee for Shivra Pyramid. That is commendable, sir. Thank you so much, sir. Thank you. It has come through me, madam. I have not donated. Somebody else has donated. You see, people give me donation and I give others donation. So it has come through me. I have not given. It has come through my channel. That's all. The credit goes to the other person. You are the first master in PSSM who has given money for Shivpriya. Thank you so much, sir, for that. First master? Means? Only you are the master that he given to Shivpriya. Only you. Not. Anyways, so sir, lots of gratitude and thank you. And eagerly waiting for you for Raipur. Come to Raipur. And nothing much, sir. Everything is fine.
Okay, okay, madam. Thank you very much. It is an opportunity that the money has come through me, right? So I cannot take the credit for it. See, I'm not doing any job. I'm not doing any business. I don't earn money. The money simply comes through me. That's all. Sir, I want to share my experience, first experience, which I have shared with Neeta also. One day I was meditating in the morning, and like I've seen you are taking some session, and then from there I went in trance, and then from there you took all the people to I think upstairs for another session. Shambhala. So I just came out from my trance, and I can't see you, and I saw the bundles of money. I saw bundle of money set, on the top some desk and all. And from that very day, sir, I want to tell you, continuously money is flowing and coming to Shipriya. So I don't know what was that. And I was just meditating, and I was just light, and I was going upstairs, and I just stuck on the top. So I couldn't understand what is that. But really, from that very day, money is coming. And you were Good. the first. Good. Okay. Good, madam. Money is just an energy. When you use it for the right purpose, then it has a meaning. Money has a meaning. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Yes. So, Poonam, we'll take one last question. I think she's raising her finger. This is the last question. Yes, thank you so much, sir. And first of all, deep gratitude towards to you, sir. I'm from Pune, Maharashtra, and would like to ask one question, sir. I got many answers for my doubts in these 3 days, sir, past 3 days. बट जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन मुझे ऐसे पूछना था. मैं 1.5 साल से कर रही हूँ मेडिटेशन, आनापानसति मेडिटेशन. आई गॉट टू इंट्रोड्यूस दिस मेडिटेशन थ्रू आवर PSSM YouTube channels, and we started at home in COVID duration. 1.5 साल से मैं कर रही हूँ. I can definitely saw my own growth, spiritual growth. काफी सारी चीजें क्लियर हो गई है, हो रही है. बट शुरुआत में जो 6 महीने मैंने महसूस किया, रियलाइज किया मेरा मेडिटेशन स्पिरिचुअल जर्नी, अभी मैं काम बहुत हो गई हूँ. काफी सारी चीजों के सॉल्यूशंस मुझे मिल रहे हैं, अंदर से काफी पीस महसूस होता है. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग दिस नॉलेज और टीचिंग मेडिटेशन टू अदर्स ऑल्सो, माई फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड एवरीवन. बट अभी मुझे ऐसे लग रहा है पिछले 2 महीने से कि कहीं जो अंदर पहले मुझे जो क्वालिटी मेडिटेशन मेरा होता था, जो एकदम मैं ट्रांस में जाती थी या एकदम ब्लैंक हो जाती थी, डीपली कनेक्ट होती थी खुद से, वो कहीं तो भी मिसिंग लग रहा है. बट आई एम कंफ्यूज विद दैट. एक्चुअली रियली मैं मिस कर रही हूँ, या कनेक्शन वो मैं मिस कर रही हूँ, या मुझे सिर्फ वैसे लग रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर. आई एम लिटिल कंफ्यूज अबाउट दैट. तो ऐसा स्टेट आता है क्या, वो एक पूछना था सर. The beginners of meditation go into trance. The seniors of meditation, they don't go into trance. They remain in awareness. Okay, so you have graduated in your meditation. Okay. Okay. Trance में कुछ नहीं है. वो beginners के लिए chocolate, lollipop to get into the trance state. But when you do regular meditation, then your awareness increases. Okay, you take responsibility for life. Okay, you focus on your self-mastery. You will be focused on your words. Always your words will be miraculous. Your thoughts will be miraculous. Your deeds will be always good karmas. And there is detachment. There is attachment and equally detachment. So this is, you will focus on self-mastery. When you become a senior meditator, you will focus on self-mastery. Okay, so you are in the right path. Yes, thank you so much, sir. Thank you. Yes, madam. Thank you. So, okay, Neetaji, thank you very much. And yes, we will plan for a retreat, because the sweetest thing to do
is to be in silence and to be in deep meditation and to be in the company of fellow truth seekers. We will make some arrangements and we will announce it. Okay, sir. Okay. Thank you, Nita ji, and thank you, Mamta madam, for dedicating your life for Shiv Priya Pyramid. Through you, let the whole of Raipur city and Chhattisgarh get enlightened. Yes. Thank you very much. Sir. Thank you. Thank you, all of you. Sir. Thank you. Thank you. तो फ्रेंड्स, मैं अब टाइम हो रहा है इसलिए क्वेश्चन आंसर्स का ट्रांसलेशन नहीं करूंगी। बाकी 3 दिन का अगर आप लोग चाहेंगे तो इंटीग्रेशन कर दूंगी, क्योंकि रिट्रीट में थोड़ा सा इससे वास्ट में सर ने बताया था, तो उन दोनों के चैप्टर मतलब दोनों के विजडम को मैं इंटीग्रेट करके आप लोगों को जरूर बताऊंगी, और वो दशहरे के बाद, है ना। यस ममता जी, क्या ममता जी वो होस्ट हो ना? बाय बाय। अच्छा, बाय बाय। हैप्पी दशहरा। थैंक यू सर को ग्रेटिट्यूड देना था ना मुझे, इसी का आई वाज वेटिंग। अच्छा अच्छा, पर 2 बार अनम्यूट हो गए थे आप, है ना। चलिए ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, कल और परसों 2 दिन तक के हम मेडिटेशन ही करेंगे। पत्री मैडम अगर यहाँ पर रायपुर में आप लोगों से मिलना चाहेंगी तो उनसे टाइम लेके हम अपने ग्रुप में अनाउंस कर देंगे और आप लोग आके मिल सकते हैं। और यदि नहीं हुआ तो मैं और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल है। वो अमरकंटक जा रही है, वहां से लौट के फिर वो वापस चली जाएंगे बैंगलोर। तो कल मेडिटेशन के लिए मिलते हैं, सेम मीटिंग आईडी, सेम पासपोर्ट के साथ। कल दशहरा है, आप लोगों को अग्रिम एडवांस में हैप्पी दशहरा। और कुछ चलिए ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हैंड रेज करे हैं ना, मैं तो पूरे समय आप लोग के लिए अवेलेबल रहती हूँ, बिल्कुल मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोग को आंसर दूंगी। पर आज नहीं, आज बहुत टाइम हो गया है और मुझे भी कहीं जाना है। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।